গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছো। ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। বিজেপি নেতাই মুকলিভাৱে ৰাজহুৱা মঞ্চত কৈছে যে राहुल गांधी बाज आ जाओ नहीं तो अगले समय में आपके दादी के साथ जो हुआ था वही हाल आपका होगा। आसलते মন্তব্য কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা মঞ্চত বিজেপি নেতাই মন্তব্য পাছত এতিয়া ডাঙৰ খাই দিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথমে আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছো কেনেদৰে ৰাজহুৱা মঞ্চত বিজেপি নেতাই দিছিল ভাবুকি। ৰাজহুৱা মঞ্চত বিজেপি নেতাই হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কাষ চাপিছে, আইনৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি? কিয়নো ৰাহুল গান্ধীক ভাবুকি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসহ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আৰু কোৱা হৈছে ৰাজহুৱা মঞ্চত ভাবুকি দিছে যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে ৰাহুল গান্ধীৰ অৱস্থা হ'ব। এনেধৰণে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেতাই আৰু তাৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি? যিদৰে ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল অনুৰূপভাৱে ৰাহুল গান্ধীকো হত্যা কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছিল দিল্লীৰ এজন বিজেপি নেতাই। আৰু আজি কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ অজয় মাকেনে তোগলক ৰোড আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। দিল্লী বিজেপি নেতা তৰবিন্দৰ সিং মাৰৱা, শিৱসেনা সিন্ধে গোটৰ সঞ্জয় গায়কোৱাড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী ৰঘুৰাজ সিঙৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ৰাহুল গান্ধীক ভাবুকি দি এতিয়া বিপদত পৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসহ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে ৰাহুল গান্ধীৰ অৱস্থা হ'ব বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেতাই। আৰু উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰত তৰবিন্দৰ সিং মাৰৱাই এখন ৰাজহুৱা মঞ্চত সকলোৰে আগত ৰাজহুৱাভাৱে এই কথা কৈছিল, ৰাজহুৱাভাৱে ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল যে ৰাহুল গান্ধী বাজ आ जा नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। এনেকৈ আসলতে ভাবুকি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰো কেইবা ঠাইত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাহুল গান্ধীক যিহেতু এনেদৰে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে যে ইন্দিৰা গান্ধীক যেনেদৰে অৱস্থা হৈছিল, ইন্দিৰা গান্ধীক যেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে ৰাহুল গান্ধীকো হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ পাছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাৰ আশংকা কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছো ৰাজহুৱা মঞ্চত কেনেদৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীক। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी बाज आ जा नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी बाज आ जा नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का। কিছুদিন পূৰ্বে ৰৱনীত সিং বিট্টু নামৰ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে সেই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীজনেও আসলতে মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক লৈ যে ৰাহুল গান্ধী হৈছে দেশৰ 1 নম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী এনেদৰে কৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে, কিয়নো ৰাজহুৱা স্থানত বিজেপি নেতাই ভাবুকি দিছে যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ যি অৱস্থা হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ আইতাকৰ যি অৱস্থা হৈছিল যেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল আগন্তুক সময়ত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীকো তেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ব। আৰু এনেদৰে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে, দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু লগতে অসমৰ কেইবা প্ৰান্ততো ৰাহুল গান্ধীক এনেদৰে ভাবুকি দিয়াক লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধীক ভাবুকি দিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসহ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে ৰাহুল গান্ধীৰ অৱস্থা হ'ব বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেতাই। যিদৰে ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল অনুৰূপভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ হত্যা কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছিল দিল্লীৰ এজন বিজেপি নেতাই। আৰু আজি কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ অজয় মাকেনে তোগলক ৰোড আৰক্ষী থানাত দিছে এজাহাৰ। আৰু দিল্লীৰ বিজেপি নেতা তৰবিন্দৰ সিং মাৰৱাহে কৈছিল যে राहुल गांधी बाज आ जा नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। এনেদৰে ভাবুকি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ বিজেপি নেতা তৰবিন্দৰ সিং মাৰৱা, শিৱসেনা সিন্ধে গোটৰ সঞ্জয় গায়কোৱাড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী ৰঘুৰাজ সিঙৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰি কি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने
दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह, 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ खबरों যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 709901